हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। ये हमारा स्पेशल एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इससे पहले मैंने जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को दिया है। ये स्पेशल एग्ज़ाम का है, इसीलिए मैं ये लेकर के आई हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी और मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ट एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेंट्स। ये एनुअल का पेपर है आप लोगों का। ठीक है, तो एनुअल का पेपर किस टाइप का आता है आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, बी नंबर देखिए, फूड कैंस आर कोटेड विथ टीन नॉट विथ जिंक बिकॉज। ऑप्शंस आप लोग देखते जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, यूजिंग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल फॉर फार्मूला प्रिडिक्टेड फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट Al is. Then next question is, hydrochloric acid released by the gastric glands present in the wall of the stomach facilitates the action of the enzyme called। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करके बताऊंगी जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत है जिनके। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिक्वायर आयोडीन फॉर इट्स सिंथेसाइज बाय द थायराइड ग्लैंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एफ, द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन वाज फॉर्म्ड बाय। ओके, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर G, the image formed by a concave mirror is observed to be virtually erect and larger than the object. Where should be the position of the object? Okay, next question. The human eye can focus object at different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to, okay, this is due to। Next question, ये ऑप्शंस देख लीजिए, प्रेसबायोपिया, एकोमोडेशन, नियर साइटनेस, देन फार साइटनेस। देन क्वेश्चन नंबर आई, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसआई यूनिट आता है चाहे ये इसका आए या किसी और का आए, बट एसआई यूनिट आएगा ही क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर J, which of the following is not an example of a biomass energy source? Okay, biomass energy भी कॉमन है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसमें देख लीजिए ऑप्शंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, write a balanced chemical equation with state symbols for the following reaction। Okay, ये reactions देख लीजिए। So solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। Okay, next question 3, give an example of a metal which is liquid at room temperature। Okay, ये question। Then draw the structure ethonic acid। Then next question, what is a species? Okay, or what is evolution? Okay, then next question, what do you mean by power of accommodation of eye? Then what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Write the balanced chemical equation। Okay, ये वाला क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, define pH, what effects does the concentration H positive ions have on the nature of solution। ये pH के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि जिसमें मैं टिक नहीं कर रही हूँ ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ऑर्गन थ्रू विच प्लांट्स एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी गैसेस, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ CO2 and O2 in plants।
Okay, next, or what is the fueled part of our blood cells, state its function. This one. Okay, next question. State the difference between axon and dendrite. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है. और what is reflex action and what is the role played by the brain during its action. Okay, next question. Question number 11. What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. Okay, or what are the reproductive parts of a flower when a flower may be unisexual or bisexual. ये क्वेश्चन आता है. इसमें का ये दोनों क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये तो मस्ट है, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन. और व्हाट इज़ एन एल्वोली एंड व्हाट इज़ इट सिग्निफिकेंस. देन 13. द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये आता है. हो सकता है यहाँ पे आपका नंबर चेंज करके दे दे, बट ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 40 नंबर. Current of 0.5 A is drawn by a filament of an electric bulb for 16 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. Okay, then what is the principle of electric motor. Yes, electric motor के ऊपर क्वेश्चन बनता है. Then what is the role of the decomposer of ecosystem. Explain briefly. Okay, then next question is what will happen if kill all the organisms in one tropic label. Then take about 0.5 gram of sodium carbonate in a test tube. Add 2 ml of dilute HCl to the test tube and answer the following questions. What happens in the test tube. Then if you pass the gas produced in A through lime water, what is the product formed. Okay, then what happens if you pass excess of carbon dioxide through the product in B. Okay, then question number. और इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है. You have been provided with 3 test tubes. One of them contain distilled water and the other 2 contain an acid solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube. Okay, then next question is 19. Take about 2 gram of lead nitrate powder in a boiling tube and heat is over a flame. Explain your observation with balanced chemical equation. To which type of chemical reaction does it belong. और देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये रिपीट करेगा, बट इस स्ट्रक्चर के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 19. Or what happens when white silver chloride is kept in sunlight. Write the chemical equation for the above change. Mention the type of the chemical reaction. Okay, then ये Mendeleev's, one most important question. Mendeleev's periodic law आता ही है एग्जाम में. What is Mendeleev's periodic law एंड उसका कुछ लॉज था ना, वो भी आता है, ठीक है. मेंशन टू अचीवमेंट्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. मेंशन टू अचीवमेंट्स एंड टू लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ओके, लॉ के ऊपर भी आता है क्वेश्चन मेंडलीव्स का. और एक्सप्लेन डॉवरेंस ट्राइड्स विथ एग्जाम्पल. Then did Dovren's triads exist in the columns of Newland's octave? This question. Okay, this is okay. Then next question. How many elements were known at the time of Newland's? Name the first and the last element with which Newland started his classification of elements. What was the element up to which Newland's of octaves was applicable? Okay. Then next question is what is constituent the central nervous system? What is the system that facilitates the communication between the central nervous system and the other body parts? Name the nervous system. Nerves this system consist of. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. नर्वस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, अब किस टाइप का आएगा आई डोंट नो, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है.
हो सकता है उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन आए, बट आएगा श्योर. ओके, देन हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर इन प्लांट्स. देन ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल. या राइट, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर. मेंशन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल दो होते हैं ना, तो दोनों ही करके जाना, दोनों में से कोई एक डेफिनेटली आएगा. मेंशन इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड स्टेट देयर फंक्शंस. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is regeneration, give the difference between regeneration and budding. Okay, then what is a trait, with the help of one of the Mendel's experiment show that the traits may be dominant or recessive. Okay, this is question number 24. Or next question is or what is variation, how does creation of variation in a species promote survival. Okay, then question number, ये variation के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, सो इसे देख करके जाना आप लोग. ओके, वेरिएशन के ऊपर भी आता है क्वेश्चन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the height and what is the A heights and B lowest that resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm. ohm से related practical questions आते हैं. और the value of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. Okay, then plot a graph between V and I and calculate the resistance of the resistor. Then question number आपका है 26. Explain about the magnetic field produced due to a current through a circular loop. और what is a electromagnetic induction. ये क्वेश्चन आता है और कभी कभी ड्रॉ करने भी आता है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट हैज़ डिफ़िकल्टी इन रीडिंग द blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the student is suffering from? Draw a ray diagram correcting the defect. Or why is a normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25 centimeter. This is 25 और ये वाला क्वेश्चन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ये डिसएडवांटेज आया है तो एडवांटेज भी आप लोग देख लेना थोड़ा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन. देन शो द फॉर्मेशन ऑफ MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देन व्हाट इज रोस्टिंग एंड राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ जिंक एंड ऑर्स. ओके, ये क्वेश्चन. Then next question is why is sodium kept immersed in kerosene oil. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है. सोडियम को क्यों केरोसिन ऑयल में भिगो कर रखा जाता है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिनेबार. राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन इट इज हीटेड इन एयर. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain thermat reaction with suitable example. Then write the formula of cyclopentane and draw its structure. Then what is addition reaction, give one example. Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid and oxidation reaction. ये वाला question. Okay. Then next question, explain homologous series with example. ये भी important है. Then what are saturated compounds of carbon. Then next question, define functional group with example. Draw the electron dot structure of ethane. ओके, तो यहाँ पे देखिए इथेन का दिया है, हो सकता है कुछ और का इस बार दे दे. ठीक है. राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. ये कंपाउंड्स के नेम बताने हैं आपको. ये वाला स्ट्रक्चर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है question number, what are the components of the transport system in highly organized plant. Write about the process of transportation of food and other substance in plant. Okay. Then next question number or what is digestion. What are the different parts of our digestive system. Write about the function formed by the digestive enzymes released at different regions of the system. ये question तो important है ही.
Okay, next question. An object 25 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. Okay, then an object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should be screen be placed or in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. Okay, सो दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे मैंने जितने भी टिक करके दिए हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को आप लोग डेफिनेटली फॉलो कीजिए. और मैंने टाइम टेबल और कैसे अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट कर सकते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है. तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखें और शेयर करें. तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.